ஸ்ரீமத் பாகவதம் இரண்டாவது ஸ்கந்தம் நான்காவது அத்தியாயம். அத சதுர்தசோऽध्यायः. சுத உவாச்ச வையாசகேரிதி வச்சஸ்தத்வனிநிश्चयमात्मनः उपधार्य मतिं कृष्णे औत्तरेय सतिं व्यधात्. आत्मजाया सुतागार पशुद्रविणबन्धुषु राज्ये चाविकले नित्यं विरूढां ममतां जहौ. पप्रच्छ चेममे वार्तं यन्मां पृच्छते सत्तमाः. कृष्णानुभावश्रवणे श्रद्धधानो महामनाः. समस्तां विज्ञाय संयस्य कर्मत्रैवर्गिकं चयतु. वासुदेव भगवती आत्मभावं दृढं गतः. राजोवाच समीचीनं वचो ब्रह्मन् सर्वज्ञस्य तवानघ. तमो विशीर्यते मह्यं हरे कथयत कथां. भूय एव विवित्सामि भगवानात्ममायया. यतेदं सृजते विश्वं दुर्विभाव्यमतीश्वरैः. यथा गोपायते विभुर्यथा संयच्छते पुनः. यां यां शक्तिमुपाश्रित्य पुरुषशक्तिः परपुमान्. आत्मानं क्रीडयन् क्रीडन् करोति विकरोति च. नूनं भगवतो ब्रह्मन् हरेरद्भुतकर्मणः. दुर्विभाव्यमेव भाति कविभिश्चापि चेष्टितम्. यथा गुणांस्तु प्रकृतेर्युगपत् क्रमशोऽपि वा. बिभर्ति भूरिशस्त्वेक कुर्वन् कर्माणि जन्मभिः. विचिकित्सितमेतन्मे ब्रवीतु भगवान् यथा. शाब्दे ब्रह्मणि निष्णात परस्मिंश भवान् खलु. सुत उवाच इत्युपमन्त्रितो राज्ञा गुणान् कथने हरेः. ऋषिकेशम् अनुस्मृत्य प्रतिवक्तुं प्रचक्रमे. श्रीशुक उवाच नमः परस्मै पुरुषाय भूयसे सदुद्भवस्थाननिरोधलीलया. गृहीतशक्तित्रतयाय देहिनाम् अन्तर्भवायानुपलक्ष्य वर्त्मने. भूयो नमः सद्वृजिनचिदे सताम् असम्भवाय किल सत्त्वमूर्तये. पुंसां पुनः पारमहंस्य आश्रमे व्यवस्थितानां मनुमृग्यथाशुषे. नमो नमस्ते वृषभाय सात्वतां विदूरकाष्ठाय मुहुकुयोगिनां. निरस्तसाम्यातिशयेन राधसा स्वधामनि ब्रह्मणि रंस्यते नमः. यत्कीर्तनं यत्स्मरणं यदीक्षणं यद्वन्दनं यत्श्रवणं यदर्हणं. लोकस्य सद्यो विदुनोति कल्मषं तस्मै सुभद्रश्रवसे नमो नमः. विचक्षण यच्चरणोपसादनात् सङ्गं यदस्यो भयदो अन्तरात्मनः. विन्दन्ति हि ब्रह्मगतिं कदक्लमास्तस्मै सुभद्रश्रवसे नमो नमः. तपस्विनो दानपरा यशस्विनो मनस्विनो मन्त्रविदः सुमङ्गलाः. क्षेमं न विन्दन्ति विनायदर्पणं तस्मै सुभद्रश्रवसे नमो नमः.
किरातहो नान्द्रपुलिन्दपुल्कसा आबीरकाङ्गा यवनाकसादयः येऽन्ये च पापा यदुपाश्रयाश्रयाः शुध्यन्ति तस्मै प्रभविष्णवे नमः। स एष आत्मात्मवतामधीश्वर श्रयिमयो धर्ममयस्तपोमयः गतव्यलीकैरजशङ्करादिभिर्वितर्क्यालिङ्गो भगवान् प्रसीदताम्। श्रियपतिर्यज्ञपतिः प्रजापतिर्धियां पतिर्लोकपतिर्धरापतिः पतिर्गतिशान्तकवृष्णिसात्वतां प्रसीदतां मे भगवान् सतां पतिः। यदङ्घ्र्यपि ध्यानसमाधितौ तया धियानुपश्यन्ति हि तत्त्वमात्मनः वदन्ति चैतत्कवयो यथा रुचं स मे मुकुन्दो भगवान् प्रसीदताम्। प्रचोदिता येन पुरा सरस्वती वितन्वता जस्य सतीं स्मृतिं हृदि स्वलक्षणा प्रादुरभूत्किलास्यतः स मे ऋषीणां वृषभः प्रसीदताम्। भूतेर्महद्भिर्य इमा पुरो विभुर्निर्माय शेते यदमूषु पूरुषः भुङ्क्ते गुणान् षोडशात्मकः सोऽलङ्कृशिष्ट भगवान् वचांसि मे। नमस्तस्मै भगवते वासुदेवाय वेदसे पपुर्ज्ञानमयं सौम्या यन्मुखाम्बुरुहासवम् एतदेवात्मभूराजन्नारदाय विपृच्छते वेदगर्भोऽभ्यधात् साक्षात् यदाह हरिरात्मनः। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां द्वितीयस्कन्धे चतुर्थोऽध्यायः। श्रीहरये नमः। श्रीहरये नमः। श्रीहरये नमः। गोपिका जीवनस्मरणं गोविन्द गोविन्द। सद्गुरुनाथ महाराज की जय।